session. Yeah, today we have the remaining terms जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें I have done negative capability and except negative capability I have taken uh, uh, Philistinism and touchstone method, egotistical sublime, and except it you will come to know I have also gone with uh, touchstone method already. I mentioned it. Willing suspension of disbelief and negative capability. So these were the words which I took yesterday. But tomorrow I have some beautiful words for you, and the same remaining file I will share with you, and I will discuss what I have to do. And one thing I would like to tell you ki I have shared a sheet in which you will come to know about forms of poetry. That sheet is important because some question you will get that is highly significant for UGC net. Sometimes you find the work, its date, and what type of work that is. So that is important. But that sheet I will not discuss on your platform. I will discuss at another platform, but I will send you video because on this platform I will only discuss literary term एंड न्यू लिटरेचर. अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं केवल दो चीजें डिस्कस करूंगा, लिटरेरी टर्म को डिस्कस करूंगा और न्यू लिटरेचर को डिस्कस करूंगा. तो अभी जो हम बातें कर रहे हो किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी टर्म्स. बट some PDF file I sent you, and that PDF file is very important. Already I mentioned you. You have to go that PDF file, and what you have to do, you have only to read and prepare the notes. You have to highlight, and later on I will send you the video. When I send you the video, you have to go with that video. You have to just cover, or you have to just listen that video. Then you will come to know how I have explained it. Yeah, which points are significant in that. Recently, I think before 20 minutes ago I sent that file, yeah, half an hour. But let me share you the PDF file in which I have discussed the literary term. Yeah, today I have done what? Today I have done negative capability, egotistical sublime, willing suspension of disbelief, touchstone method, Philistinism, and now what I have to take, Oxford movement or Tractarian movement. It's a very important movement. But before taking this movement, I just want to revise those points which I have taken yesterday. Yeah. Can you tell me if I talk about if I talk about something that is what I have gone with negative capability. Just I want to know who propounded the theory negative capability. Who propounded the theory negative capability? About Shakespeare. Yeah, it was about Shakespeare, but who gave this concept? John Keats. John Keats. John Keats they gave this concept. John Keats wrote a letter to his brother. John Keats wrote a By letter to his brother. 22nd December and some 17, 1675. Yeah, 1817. 1817. Yeah. Second thing I want to know that is the important key. When I talk about egotistical sublime, this concept was also given. This concept was also given by John Keats, but about whom? William Wordsworth. Yeah, William Wordsworth. If I say there is a concept willing suspension of disbelief, it was given by whom? St. Coleridge. ST College. And this willing suspension of disbelief, he mentioned in which book? He gave this concept in which book? Literary biography, I think. Yeah, Biographia Literaria. Biographia Literaria, Yeah. 1817. Biographia Literaria. Yeah, one thing I want to tell you ki when I talk about these things, there are some remaining concept also. One is what? One is
Touchstone method. Who gave the concept of touchstone method? Matthew Arnold. Yeah, that's good. Matthew Arnold gave the concept of touchstone method. If I say ki touchstone method, that is a concept, and he gave this concept in studying of poetry, studying of poetry. Yeah. Now, there is another concept that was the concept of the Philistinism. Who gave this concept? Who gave this concept? Philistinism. Oh, I don't remember. Okay, Rama or anyone? Shamama? It was also given by him, Matthew Arnold. I hope. Yeah, it was also given by Matthew Arnold. So Yeah. जितना भी concept है very beautifully Om Prakash bhai answered, and we come to know that yesterday on this platform I have taken 5 points. उस पॉइंट्स को मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने लिए थे? एक पॉइंट्स मैंने लिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो निगेटिव कैपेबिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन कीट्स ने दिया है। एंड यू विल कम टू नो निगेटिव कैपेबिलिटी में उन्होंने कहा है कि अल्टीमेटली बीइंग अ ह्यूमन वी ऑल निगेट, what we all negate, we all deny that we are not only the rational creature of God, but we are ready to welcome others. That is known as the smallest object or the pettiest object. Then we become able, what we became able to understand something. Then we become able to understand something. So you will come to know negative capability. It's a May term May coined I by say whom? something? May I say Yeah, you something? can say. Yeah. Actually, as far as I think, I mean, I can say that forgetting oneself. I mean, if I'm attending someone, forgetting myself, what I am, I Yeah, accept another yeah, and transform, transform uh, one and all. If I'm yeah, playing a character, then I have to forget myself, and I become. Suppose I play the role of Hamlet, then I become Hamlet. I will think like Hamlet, not like me. So yeah. I think Okay, okay. this could be a negative capability. Yeah, undoubtedly. That is means ki that we have to kill our own existence and we have to just be the part of. Yeah, we have to be the part of that character, the role which we are going to play. The role which we are going to play. Yeah, in other words, when you say there is what already I told you ki there is a line, and what was that line? That line was when man is capable of being what? When man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason, then that situation is the situation of negative capability. So when we come to know about this concept, it has been given by whom? It has been given by John Keats. Egotistical sublime, it was also given by John Keats. And egotistical sublime, he defined it in the light of Wordsworth poetry. Willing suspension of disbelief, it's a concept given by S.T. Coleridge in his book Biographia Literaria. And you will come to know उसमें भी उन्होंने बताया कि what कि infuse a human interest and a semblance of truth into a fantastic tale. Later on, we find this concept in the form of magic realism or science fiction also. But you will come to know this is the situation. कि willing suspension of disbelief, the thing which we believe that is it's unbelievable. Yeah, we can't believe that thing should be created in this way that the people are going to accept and the people are going to believe. That situation is known willing suspension of disbelief. Negative touchstone method, it's a concept given by whom? It's a concept given by Matthew Arnold. Philistinism, a concept given by Matthew Arnold for the people of the middle class English people who don't have any interest in culture, who don't have any interest in aesthetics or values. Now the next point, what I have taken for you, I have taken for you Oxford movement or Tractarian movement. If I talk about Oxford movement or Tractarian movement, there are some important points. And what is that? Key? A movement of thought and doctrine. Oxford movement or Tractarian movement, a movement of thought and doctrine within the Church of England. Where did it start? It started within the Church of
इंग्लैंड। और ये कैसा मूवमेंट था? इट वाज अ मूवमेंट ऑफ व्हाट? इट वाज अ मूवमेंट ऑफ थॉट एंड डॉक्ट्रिन। एंड यू विल कम टू नो विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड सेंटर्ड एट ऑक्सफोर्ड, और इसका सेंटर कहाँ पे था? ऑक्सफोर्ड में था। which began with the assize sermon, which began with the assize sermon on national apostasy preached by John Cable. So, who was the leader of this movement? The leader of this movement was John Cable. What you have to keep in your mind? You have to keep only 2 or 3 points in your mind. And what are those points? Number one, you have to go that it was a movement of thought and doctrine. Number 1 point. यह जो movement था, यह एक नए विचार का मूवमेंट था और नए सिद्धांत का मूवमेंट था। और यह नए विचार और नए सिद्धांत कहाँ पे पनप रहे थे? विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और चीजें आपको छोड़ देना है। देन यू हैव टू रिमेम्बर कि हु जस्ट started this movement. The movement was started by John Cable, Kebele, in 1833. Then you have to go the movement aimed to defend the Church of England. अब ये इसका movement का aim भी पता चला. What was the aim of the movement? The aim of the movement was to defend the Church of England. जो Church of England है उसको defend करना, यह एक purpose था. As a institution with an independent spiritual status. और इसको कैसे जो है डिफेंड करना था? As a institution, as a divine institution. What institution? Divine. यह जो संस्था है यह ईश्वर की देन है, मैन क्रिएटेड नहीं है, एंड इट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ गॉड. इज इट मीन्स दैट मैन, you can say कि does not have any right to disturb this institution. So you will come to know what? You will come to know कि the movement aimed to defend the Church of England as a divine institution with an independent spiritual status, and to revive द हाई चर्च ट्रेडिशन. और एक इसका और ऑब्जेक्टिव था, वह क्या था? एंड टू रिवाइव द हाई चर्च ट्रेडिशन. जो चर्च का इंपॉर्टेंस 17th सेंचुरी में था उसके इंपॉर्टेंस को दोबारा रिवाइव करना. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इन 17th सेंचुरी, बिफोर 17th सेंचुरी, व्हाट वाज द रोल ऑफ द चर्च, स्पेशली कैथोलिक जो रोमन चर्च था उसका. So again, I would like to tell you, when we talk about Oxford movement, when we talk about Tractarian movement, यह एक ऐसा movement था that was a movement of thought, that was a movement of doctrine. और कहाँ पे? within the Church of England, within the Church of England, centered at Oxford. और इसका सेंटर कहाँ पे था? ऑक्सफोर्ड में. इसको शुरू किसने किया? जॉन केबल ने इन 1833 में. द मूवमेंट का पर्पस क्या था? टू डिफेंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड. और कैसे? एज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन विद एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल स्टेटस एंड टू रिवाइव द हाई चर्च ट्रेडिशन ऑफ द 17th सेंचुरी. द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, फर्स्ट रिफॉर्म बिल जो पेश किया गया था 1832 में, हम सारे लोग जानते हैं. एंड द व्यूज ऑफ द बोर्ड चर्च सपोर्टर्स such as Thomas Arnold had led many to believe that the church was in danger of increasing subordination to civil control. इन्होंने ये बताया कि जो चर्च है उसका फ्रीडम खत्म हो रहा है, चर्च जो है क्या हो जाएगा? सबॉर्डिनेट हो जाएगा और सिविल कंट्रोल में आ जाएगा. इस चीज को लेकर के तमाम बातें होने लगी थी. कब? विद द पासिंग ऑफ द बिल रिफॉर्म एक्ट इन 1832. थॉमस अर्नोल्ड ने ये बात कही है. सो यू विल कम टू नो, ये पूरा जो मूवमेंट था चर्च की एग्जिस्टेंस को लेकर के था, चर्च की राइट को लेकर के था. एंड टू इस्टेब्लिश चर्च एज अ, नॉट टू इस्टेब्लिश बट टू डिफाइन, टू डिफेंड चर्च एज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन. और कैसे? विद एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल स्टेट्स, ये अपने में एक इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल स्टेटस इसका था. सो दीज वर द पॉइंट्स. बट व्हाट आई वांट टू से कि as the reform bill was passed, it was said that no church will be subordinated. It will be controlled by civil, subordination to civil control. These things you will come to know. Such things have been expressed. And here you find what? John Cable. You find कि John Cable's sermon, जो जॉन केबल का सरमन था, जो उपदेश उन्होंने दिया था 1833 में, इसने इंस्पायर किया किसको? जॉन हेनरी न्यूमैन. जॉन हेनरी न्यूमैन. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम आल्सो.
John Cable, John Henry Newman, Richard Hurrell Froude. These were the prominent figures who started this movement and others to launch their series tracts for the time 1833. इन लोगों ने क्या किया इस पर अपना सीरीज लिखना अपना पैम्फलेट वगैरह लिखना शुरू किया विच गेव द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट इट्स नेम इन्होंने जो सीरीज लिखा जो ट्रैक्ट लिखा उसके बाद ही इस मूवमेंट का नाम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट पड़ा और इसका जो सेंटर था वह ऑक्सफोर्ड था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पड़ा तो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट या ऑक्सफोर्ड मूवमेंट दोनों एक ही है ऑक्सफोर्ड जगह की वजह से पड़ा है और ट्रैक्ट जो है वो पैम्फलेट की शक्ल में जो उन्होंने अपना लिखा इसको लेकर के उसकी वजह से पड़ा The series gained the influential support of Edward Pusey. एडवर्ड पूजे ने भी इसका सपोर्ट किया एडवर्ड पूजे ने भी सपोर्ट किया who gave the movement cohesion and authority. The idea of a Christian church 1844 by Ward uh, William Ward and Froude's literary remains Newman's XC 1840 one tract are the well-known works which describe the objective and aim of this movement. So you will come to know यह एक ऐसा मूवमेंट था जो ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से आया इस मूवमेंट का असर लिटरेचर में भी पड़ा यह मूवमेंट किस एज में आता है विक्टोरियन एज में आता है और स्पेशली यह मूवमेंट उस समय शुरू हुआ जब कि यू विल कम टू नो फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज पास्ड 1832 में जब वो पास हुआ उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट आया और वह कॉन्सेप्ट क्या आया कि चर्च इज इन डेंजर द फ्रीडम ऑफ द चर्च इज गोइंग टू बी स्नैच्ड एंड यू विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल मीन द प्रीचर जो धार्मिक उपदेशक थे आर द चर्च मैन आर द बिशप दे बिलीव दैट चर्च इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन एंड इट शुड बी डिफेंडेड and it has what it must have इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस उसमें किसी की दखल अंदाजी ना हो चर्च मस्ट नॉट बी सबॉर्डिनेटेड सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ट्रैक्टेरियन मूवमेंट तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जगह के नाम से पड़ा ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो उन्होंने ट्रैक्ट या पैम्फलेट लिखा और इसका शुरू करने वाले आदमी का नाम जॉन केबल ने कब शुरू किया 1833 में जॉन केबल स्टार्टेड इट इन 1830 theory you will come to know and other thing you find that the movement aim to defend what to defend the church of england and you also come to know ki it was what ki spiritual status and to revive the high church tradition of the 17th century the reform act which started in 1832 and the views of both church these things you will come to know ki how church came in danger and how it was believed that it must have the independent status and it should not be subordinated किसी के सबॉर्डिनेशन में ना रहे ये सारी बातें हुई देन यू हैव टू रिमेंबर व्हाट देन यू हैव टू रिमेंबर सम ब्यूटीफुल नेम्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मूवमेंट जॉन केबल है जॉन हेनरी न्यूमैन है रिचर्ड हरेल फ्राउड है देन एडवर्ड पूजे और उसके बाद जो कुछ किताब लिखा गया द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन चर्च बाय विलियम वार्ड फ्राउड्स लिटरेरी रिमेन्स and Newman's 1841 tract are the well-known works which describe the objective and aim of this movement. I think you got it. Anyone? Yes, Anyone? yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. problem? Yeah, I would like to ask some questions, especially मैं नाम लेके पूछना चाहूंगा, then they have to give the answer. Rama, are you getting my voice? Yes, sir. I'm getting your voice. Yeah, okay. Just I want to know why the movement was called Oxford or Tractarian movement. Because because Yeah, this movement is known as Oxford movement because this is a movement of thought and doctrine within the Church of England, centered at Oxford. yeah, that is And the answer. Centered at Oxford. Yes, answer. Centered at. Why is it called Tractarian movement? so
because some tracts or pamphlets have been written by these, you can say, the beautiful names which I mentioned here, Henry Newman, Richard Harrell Fraud. So the series which they started to defend the church, that series was the tract. Tract means in the form of the pamphlet. This is why it is also known as Tractarian movement. Yes, sir. Tract, it refers to what? That's it refers to pamphlet. Okay. Okay, okay. Manisha, are you getting my voice? Manisha, you can unmute. When Yes, the sir. first reform, yeah, when the first reform bill was passed, So, sir, 1833. the first reform bill, no, the Reform Act, do you get this point? The Reform Act 1832. 1832. Ji, sir. Sorry, sir. The Reform Bill was passed in 1832. Okay. Now I want to know ki the movement is started. This movement, Oxford movement or Tractarian movement, Manisha, it is started. Can you tell me the date, especially the sermon was given by John Cable. After that sermon, the movement Ji, started. sir. 1833. 1833 जॉन केबल ने जी सर. एक सरमन दिया जी था सर. दैट वाज जी. 1833 ओके ओके मनोज शुक्ला भाई की फैमिली भी जुड़ी है मैं मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम आर यू गेटिंग माय वॉइस मनीषा म्यूट कर लो शमामा या शमामा आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि Yes. tell me the name of those persons or personalities who contributed in the development of this movement. Those who were supported, Yeah, Thomas Arnold. yeah. What is the question, And sir? say, my question is who contributed in the development of this movement? Who led this movement? Sermon, sir. Not sermon. I'm asking कि इस मूवमेंट को किसने चलाया था उनका नाम क्या था जैसे आपने एक नाम थॉमस अर्नोल्ड बताया एंड अदर या आई थिंक कि मनोज शुक्ला मैडम की फैमिली मैडम आप कुछ कहना चाह रही यू हैव अनम्यूटेड सर, आपने मुझे मतलब नाम लिया था ना मेरा. हाँ हाँ या आई कॉल्ड यू बट you didn't respond me this is why yeah that time I सर. think you could not mute yourself yeah Yes, sir. Yes, sir. I couldn't uh, mute. What is yeah the question, sir? yeah my question is ki who just contributed in the development of Oxford or Tractarian movement Sir Thomas Arnold. and And sorry, sir. all these names you have to mention John Cable Thomas Yes, Arnold Henry yes, sir. Yes, Newman sir. John Henry Newman Richard Harrell Fraud. These names you have to mention, and you have to tell the idea of a Christian church by William Ward. Fraud's literary remains. These all people contributed. So you have only to mention these names which I discussed with you. या ओके दैट्स गुड कोई बात नहीं शमामा ने भी बताया कुछ ना कुछ मैडम ने भी बताया मैं ओम प्रकाश भाई से पूछना चाहूंगा ओम प्रकाश भाई व्हाट वाज द या प्लीज म्यूट शमामा प्लीज म्यूट Okay, sir. Okay. Om Prakash bhai, what was the objective of this movement? What was the objective? Secure the what was the limitation of church, what was the freedom of church. It was subordinated by someone, so these personalities supported to secure the
authorities of church, because it could not be subordinate. It could not be governed by some other things, other section of the society. Yeah, So I yeah, think it that's was because it was a religious movement also, because they help, they save for a church, and church is a matter of religion, so it could be a religious movement also. So yeah, yeah. Yeah, the objective of this church was to defend the church. The objective of this movement was to defend the church as a divine institution. And just as Om Prakash Bhai told ki, it should not be subordinated, it should not be governed by third party, but it should have what? It must have an independent status. So to re-establish, yeah, to revive the high church tradition of the 17th century, with this objective, the movement was started. So I think कि whatever I explained ये सबको समझ में आ गया. अब कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को. Should I take uh, the next point? excuse me, sir. I want to say one thing, sir. Yeah, Sir, if you please, matlab, do the same as today you are doing, because questionnaire is a very important fact for remembering everybody. yeah, Uh, until you explain and we understood, and next time we yeah, forget. When we answered yeah, your questions, everyone answered, so it be yeah. remain, it be can imbibe in our thought, in our mind. So Undoubted, it undoubted. is the best idea. After Yeah. explaining, you ask questions, and we are ready to respond. We are ready to reply, sir. Okay, that's good. That's good. Okay, okay. Yes, I will follow. I yes. will follow. Okay, Thank you, sir. okay. So I'm going to take this next point. That is what? That is the aesthetic movement. When I talk about the aesthetic movement, already before defining this movement, here I want to mention one significant point. And what is that significant point? Ki aesthetic or aestheticism. It's a word which refers to an ideology. Aestheticism, it refers to an ideology, believing in that ideology or practicing in that ideology, and the ideology refers to what it stands for, beauty. It stands for beauty. It means that anyone who say that I believe in aestheticism, yeah, I am a person who has aesthetic sense, it means that he has the concept of beauty. तो एस्थेटिसिज्म जो शब्द है या जो एस्थेटिक मूवमेंट है, यह मूवमेंट ऐसा था जो किससे रिलेटेड था? ब्यूटी से रिलेटेड था. ब्यूटी के साथ साथ दूसरा चीज कि जब कोई भी चीज ब्यूटीफुल क्रिएट की जाती है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज व्हाट? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग डिलाइट. सो कभी भी इफ एनी पर्सन यूज द एस्थेटिक वर्ड, if any person use the aestheticism, always these two words come in your mind. Number one, beauty, and number two, delight. ये जो दो शब्द है ये ध्यान में रखना है. You will come to know a cult of sensibility है, developed in the 1870. कब आया हुआ था? 1870 में and 1880s. 10 साल के आसपास ये मूवमेंट चला था, 1870 से 1880 के आसपास. एंड इन्फ्लुएंस बाय द प्री राफेलिट्स. और यह जो मूवमेंट था इसके ऊपर या इसको प्रभावित करने वाली एक स्कूल ऑफ पोइट्री थी जिसको क्या कहा जाता है? प्री राफेलिट मूवमेंट्स. दिस प्री राफेलिट मूवमेंट आल्सो केम इन विक्टोरियन एज. प्री राफेलिट मूवमेंट्स. एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा इसको जो और प्रभावित करने वाले लोग थे कौन थे? जॉन रस्किन एंड वाल्टर पेटर. You remember that. ये दो तीन शब्द आपको नहीं भूलना है. A movement which came या developed in 1870 and 1880. 70 से 80 के दशक में यह जो है 1870 से 80 के बीच में आया या अपना डेवलप हुआ. इसके ऊपर इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से थे? प्री राफेलिट्स इसने इसको प्रभावित किया, जॉन रस्किन ने प्रभावित किया, वाल्टर पेटर ने प्रभावित किया. और कैसे?
इसमें बताया गया इन विच आर्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम मोरालिटी, जिसमें आर्ट को मोरालिटी से सेपरेट किया गया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ आई से कि फ्रॉम मोरालिटी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आवाज मेरी जा रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके। So just I want to say, yeah, just I want to tell you कि when I talk about this movement, we have to keep two things in our mind. Number one, beauty. Number two, delight. Number second, the movement developed in the 1870s and 1880s, influenced by whom and what? Pre-Raphaelite movements, the Pre-Raphaelite School of Poetry, इसके अलावा जॉन रस्किन एंड वाल्टर पेटर। इन लोगों ने क्या किया था? आर्ट को मोरालिटी से सेपरेट किया था। what was the objective of this movement? The objective of this movement was to separate art from what? To separate art from मोरालिटी। आई जस्ट वांट टू नो कि आर्ट को मोरालिटी से कैसे सेपरेट किया जाता है। सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि आर्ट का मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता है। आर्ट का मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज से, और मोरालिटी का मतलब वो सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव मॉरल एजुकेशन देना है। मोरालिटी का मतलब वह सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड or to impart a moral education. So you will come to know what was the objective. The objective was to separate art from morality. The objective was to separate art from morality. It means that if I talk about art, art means ultimately fine arts. And if I talk about fine arts, you can just say movie, you can just say poetry or literature. Literature, what literature? Literature of power. Literature of power. If I talk about something, you can say painting, something singing, something dancing. ये सब किसके अंतर्गत आता है? आर्ट के अंतर्गत, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग डिलाइट। इफ आई टॉक अबाउट नीति शास्त्र, एथिक्स, if I talk about preaching, if I talk about some religious text, if I talk about some rituals, you will come to know उसके पीछे जो भी मकसद होता है वह क्या होता है? टू गिव मॉरल एजुकेशन। तो इस मूवमेंट ने सबसे पहला चीज ये बताया कि ये दोनों अलग अलग डिसिप्लिन है। आर्ट एक अलग डिसिप्लिन है, मोरालिटी एक अलग डिसिप्लिन है। दोनों को सेपरेट करके देखना चाहिए। पहले दोनों को एक में करके देखा जाता था। जब इन्होंने बताया कि दोनों को सेपरेट करके देखना चाहिए, तब ये हुआ कि फिर इनका पर्पस क्या होगा? इनका पर्पस ये होगा कि जो आर्ट होगा वह आर्ट केवल और केवल इस पर जोर देगा कि इट्स इंटेंशन या इफ एनीथिंग इज क्रिएटेड इन द लाइट ऑफ द फाइन आर्ट्स, what will be the objective? To bring delight and pleasure firstly, to bring delight and pleasure first, and secondly then तब क्या होगा? तब की to give moral education. Because if you see any movie, if you read any story, तो कहानी लिखने वाले का पर्पस ये नहीं होता है कि पहले वो आपको मॉरल एजुकेशन दे। पहले उसका पर्पस होता है कि story should be presented in this way, movie should be presented in this way कि that's capable to attract the reader, to draw the attention of the reader, to bind the reader, audience, watcher, सामाइन, जो भी आप वर्ड यूज करें, और फिर उसके बाद वह क्या करता है? आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन देता है या मॉरल एजुकेशन देता है। तो इस मूवमेंट का सबसे पहला पर्पस यही था, टू सेपरेट आर्ट फ्रॉम मोरालिटी। फिर उन्होंने क्या किया? एंड वेयर फॉर्म टुक प्रेसिडेंस ओवर कंटेंट। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक और चीज बताया। वह कौन सी चीज बताई?
जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएट में दो चीजें आती हैं क्रिएटिंग में। और क्या क्या चीजें आती है? पहली चीज आती है फॉर्म, और दूसरा चीज होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म का मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। इफ आई राइट अ पोयम, तो उस पोयम को लिखने का कोई फॉर्म होगा, कोई ना कोई हम स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। फिर उस पोयम में हम क्या लिख रहे हैं, उस पोयम में किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द कंटेंट। तब इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट ने यह बताया फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कंटेंट। फॉर्म जो है कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द फॉर्म ब्रिंग्स डिलाइट while the content ultimately gives a moral education. Try to understand. If you write a sonnet, तो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? कि अ पोयम ऑफ 40 लाइन्स। फिर पैटर्न क्या बनेगा उसका, या उसका फॉर्म क्या होगा? आर यू गोइंग टू कंपोज सोनेट taking the structure of Petrarchan sonnet, or taking the structure of Shakespearean sonnet, or taking the structure of Carlton sonnet? So आप जो सोनेट लिख रहे हैं, जब आप इन तीनों की बात करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट, कर्टन सोनेट, तो वहां पे उसके कंटेंट का नहीं पता चल रहा है, बल्कि उसका नाम इसलिए रखा गया कि उसका स्ट्रक्चर अलग था। कोई 14 लाइन्स में है, तो किसी में ऑक्टेव और सेस्टेट है, किसी में आपका जो है थ्री क्वार्टेट्स एंड अ कपलेट। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म। And when we talk about curtain sonnet, it means the 10.5 lines. But you will come to know when I say not content. So content may you can take any subject matter. Love theme has been taken by Petrarch. Love theme has been taken by William Shakespeare. Love theme has been taken by other sonneteers also. So that doesn't matter, theme doesn't matter, content doesn't matter, फॉर्म उन्होंने, तो इन्होंने दो चीज अलग की है। एक तो उनका सेपरेशन क्या था, आर्ट का मोरालिटी से सेपरेट करना। फिर उन्होंने बताया कि फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट की तुलना में, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फॉर्म टू प्रीसीडेंस ओवर कंटेंट। फॉर्म को कंटेंट के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया। After it, I told you, its female adherents, anti-fashionable artistic dress, it was closely associated with Oscar Wilde. ये नाम हमें नहीं भूलना है। अभी तक जितना भी बातें हुई थी, उसके बाद इस एस्थेटिक मूवमेंट का अगर उस एज में कहीं और इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, तो कहाँ पर? ऑस्कर वाइल्ड में। एंड वाज रिडिक्यूल्ड बाय जॉर्ज डू माउरियर्स इन पंच। इसको रिडिक्यूल भी किया गया जॉर्ज डी माउरियर्स इन पंच में, एंड इन गिलबर्ट एंड सुल्वियंस पेशेंस। सो इट डजंट मैटर कि वेयर इट वाज रिडिक्यूल्ड, लेकिन इसके प्रैक्टिशनर, इसका ऑब्जेक्टिव, कब इसका डेवलपमेंट हुआ, और साथ ही साथ यू हैव टू कीप इन योर माइंड की आस्कर वाइल्ड। So as Om Prakash bhai suggested me कि I have to, after explaining, I have to ask questions, I have to take you can say कि how much you became able to understand what I told you. Just I have to take your feedback, asking some questions. Now it's time to give answer, means you will give answer and I will ask question. Let me ask the first question from Rama. Rama, are you getting my voice? You can Yes, sir. unmute. Yeah, yeah, Yes, sir. okay. My question is one thing कि when I say कि aesthetic movement, it started Sir, it between 1870 and 1880. from 1870 to 1880. That's good. That's good. And the same thing I just want to know कि it has the impact of. Sir, it has the impact of pre-reflect movement. Um, John Ruskin and Walter, such as John Ruskin and Walter Pater. They Okay, are John related Ruskin to. and Walter Pater. Yes. Pre-Raphaelite movement, John Ruskin and Walter Pater. Manisha, I just want to know the movement started in which age? As you come to know ki from 1870 to 1880, my question is the movement started which age? सर Victorian age or 18 modern age? Yeah? सर
Modern is. Modern age? Sir, No, I'm sorry. Victorian age. Question, sir, question repeat कर दीजिए. Yeah, my question is the movement Hmm? started in which age? Sir, Victorian is. And what is the date of Victorian age? Sir, 1918. Try forget. Okay, you forgot it. From 1837 to 1901. 1837 से 1901 विक्टोरियन एज है. जी जी जी. Yeah, yeah. Okay, please mute. Please mute. Shamama. Yes, sir. Yeah, my question is कि what was the objective of this movement? For what the movement was started? It is the Yeah, sensibility development, no? नहीं, no. मैडम मनोज शुक्ला मैडम की फैमिली से मैं बात करना चाहता हूँ. Yes, sir. What was the objective of this movement? It's objective to separate morality from art. Yes, a very nice answer. To separate art from morality or morality from art. Yeah, that was the objective of this movement. And when I talk about art, so what do we mean by art? So art means fine arts. Art means fine arts, and what the objective of the art? Art for the first objective of the art is to give pleasure and delight of reader Yeah, or viewer. delight and pleasure. Delight and pleasure. And what is the objective of morality? Morality, the objective of morality is to give a lesson, a spiritual lesson to the people that how they can survive their life or how they should survive their life. Yeah, morality is something moral education or preaching. Okay, okay. Shamama, Yes, sir. Shamama. Yes, yes. Yeah, my next question. When you come to know about this movement, aestheticism or aesthetic movement, I just said to you that you have to keep two words in your mind. आपको दो शब्दों को ध्यान में रखना है. वो दोनों शब्द कौन कौन से रहे? What were those words? Now, ओम प्रकाश भाई just explain जो चीजें बची रह गई हैं. When we think about aesthetic movement, we should keep in our mind the word beauty Yeah. and the delight and pleasure. Okay. And fine arts, as fine arts mean, it means you can say of movie, poetry, painting. Yeah. These come under five fine arts, and we could not forget the name of Oscar Wilde because it is associated with aesthetic movement. Pre-Raphaelite movement, John Ruskin and Walter Pater are the big names which we should keep in mind for aesthetic movement. And Yeah. there are names also in George T. Morier in Punch, but Huh. it was really cool, but we could not bother about it, but it happened. Okay, that's good. That's good. So what we have to remember? We have to remember that ki when I talk about aesthetic movement, it means that as Om Prakash bhai explained, ki we have to keep in our mind two important things. One is beauty and second is delight. Second important point, the movement started from 1870. Yeah, it developed from 1870 to 1880 and it came in Victorian age and the date of Victorian age is 1837 to 1901. The ultimate objective of the movement was to separate what to separate art from morality. And what we have to do, we have to not only separate art from morality,
Except it, they also gave value to form over content. The movement was influenced by whom? Pre-Raphaelite, John Ruskin, and Walter Peter. These were the well-known personalities who influenced the movement, and except it, Oscar Wilde also. So we come to know aestheticism or aesthetic movement. Now I'm taking the last word of this session, that is here in this here. That is what? That is catacresis. That is catacresis. ये एक नया शब्द है, और नया का मतलब कि ऐसा नहीं बहुत पॉपुलर नहीं रहा है। कैटाक्रेसिस के लिए व्हाट डू यू फाइंड? अ rhetorical term. सबसे पहला चीज कि कैटाक्रेसिस इज अ rhetorical term. इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज rhetorical term, तो a term related to rhetoric. And what do you mean by rhetoric? Rhetoric means when we express our thought by decorating our language. Rhetoric means something बहुत ही लच्छेदार भाषा का यूज करना to decorate language, to just we can say कि just using figure of speech, symbols and something other, you can say कि that thing is known as the rhetoric. तो ये कैटाक्रेसिस भी rhetorical term है for the मिस एप्लीकेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। एक वर्ड या फ्रेज को इसमें मिस एप्लीकेशन कर दिया जाता है विद सीमिंग रिगार्ड फॉर इट्स ऑर्डिनरी डिनोटेशन और ग्रामेटिकल फंक्शन एज इन मिल्टन्स ब्लाइंड माउथ। एज इन मिल्टन्स ब्लाइंड माउथ द टर्म इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू स्ट्राइकिंग illogical metaphors. So here Milton's blind mouth, it's what? It refers to striking illogical metaphors such as Hamlet's I will speak daggers to her. I will speak daggers to her. मैं उससे डैगर से बात करूंगा। सो ये ये जो शब्द यूज करते हैं, मैं उससे डैगर से बात करूंगा, मैं उससे खंजर से बात करूंगा। वी नो इट अब वेरी हम वेल कि बात करते समय खंजर का इस्तेमाल नहीं होता। ओम प्रकाश भी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। सॉरी। Okay, okay, doesn't matter, doesn't. So you will come to know what? You will come to know कि catachresis is a word related to rhetorical term, number 1 point, and this term is used for what? For the misapplication of a word or phrase. इसमें किसी word का या phrase का misapplication किया जाता है with seeming disregard for its ordinary denotation, और जो इसमें ordinary denotation होता है उसको disregard कर दिया जाता है और ग्रामेटिकली फंक्शन में भी चेंजेस किया जाता है। जैसा इन्होंने दो बातें कही है, मिल्टन्स ब्लाइंड माउथ, जबकि हमें पता है कि ब्लाइंड आईज होती है, ब्लाइंड माउथ नहीं होता है। और जब आप वर्ड यूज करते हैं कि ब्लाइंड माउथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्टन का जो है अंधा मुंह, अंधा मुंह का मतलब यहाँ पे कि एक ऐसा मुख जो कि कौन क्या कह रहा है या मिल्टन क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ब खुद नहीं समझ में आ रहा। कुछ ये लोग कहते हैं कि आ, ऐसा लग रहा है कि केवल बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में। तो एक वर्ड शब्द ये होता है कि हम बोले जा रहे हैं, ये सामान्य भाषा में हमने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इफ आई यूज द वर्ड कि he has blind mouth in the sense कि he is only speaking, या either he is mom or silent, या he is only speaking, she is only speaking, but she is not caring what the word she is using. सेकेंड पॉइंट जो हैमलेट में दिया गया, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर, मैं उससे खंजर से बात करूंगा। तो खंजर से बात करूंगा, ये जो शब्द यूज किया जाता है, ये चीजें क्या इंडिकेट किया जाता है? खंजर से कोई बात नहीं करता, बात करने के लिए आपको अपनी जुबान चलानी पड़ेगी, लेकिन ये रेट्रिक है। रेट्रिक कैसा है? रेट्रिक इस तरह से है कि यहाँ पे जो है वर्ड डैगर का यूज आया बहुत सामान्य भाषा में। मींस बीइंग अ टीचर आई डोंट हैव टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अमूमन लोग ये कहते हैं जब किसी से गुस्सा होते हैं घर में अक्सर करके
कि मैं उससे जूते से बात करूंगा, तो वहां पे वो भी रेटरिक का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई ऐसा शब्द यूज करता है तो इसका मतलब कि वह कैटाक्रेसिस का यूज कर रहा है। क्यों? जूत बात करते समय जूते की जरूरत नहीं होती, इट मीन्स उसने कैटाक्रेसिस का यूज किया, उसका मिस एप्लीकेशन किया गया है कि वो वहां पे शब्द नहीं आना चाहिए था। वहां पे कि वो गुस्से में है और वह उसको जूते से मारने की बात कर रहा है। मैं उससे खंजर से बात करूंगा, इसका मतलब कि वह उसको जो है खंजर की इस्तेमाल की उसके ऊपर बात कर। इफ ही और शी यूजेस दिस वर्ड, तो ये चीजें क्या की जाती है? कैटाक्रेसिस। तो रेटोरिकल टर्म है, misapplication of a word or phrase है, with seeming disregard for its ordinary denotation or grammatical function, as in Milton's blind mouth. These things you will come to. These are the important things. So what I have taken, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं आपसे लूं, मैंने आपको बता दिया. So today I have taken for you aesthetic movement, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, एंड होप यू गॉट इट. और एक सजेशन जो था ओम प्रकाश भाई का कि आफ्टर डिस्कसिंग any point I have to ask some questions. I will follow even tomorrow the same pattern I will follow to discuss. And you have sheet already, you have this PDF file, you can just go with that sheet. उसको आप पहले से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. So in this way I'm concluding here. I think now by this session. Okay, thank you for giving me your company and thank you for listening me passionately. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, okay.